Hi everybody, myself Parveen. You are watching my channel Spreading Knowledge. In today's video, I will share one of the relevant topic of Indian polity, that is types of majorities used in the Indian Parliament. Friends, India follows a parliamentary democracy, and in a parliamentary democracy, all major decisions are taken by the parliament. So one of the important tasks of a parliament is to make the laws. To make a law, the parliament needs to pass a bill so as to it make it as a law, and for this the parliament needs a majority to pass a bill before it become a law. So there are different types of majorities in the Indian parliament. दोस्तों, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम देखते हैं कि लॉज जो भी बनते हैं वो इंडियन पार्लियामेंट ही बनाती है। तो कोई भी लॉ बनने से पहले बिल के रूप में सामने आता है। उस बिल को पार्लियामेंट को पास करना होता है। वो बिल पास होने के बाद कानून बनता है। तो कोई भी बिल को लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में कितनी तरह की मेजॉरिटीज़ है जिसको हम फॉलो करते हैं। Let's move on to our topic, that is the types of majorities in Indian parliament is concerned. Our constitution does not provide an explicit or not give a clear cut classification for the kinds of majorities needed for passing various kinds of bill. But a careful interpretation of the constitution provides four major types of majorities. They are: first one, simple majority; second, absolute majority; third, effective majority; and fourth one, special majority. दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में आज हम चार तरह की मेजॉरिटीज़ को हम देखते हैं, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी आती है, अब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी आती है और स्पेशल मेजॉरिटी आती है। तो आगे हम देखेंगे कि इन सब मेजॉरिटीज़ का हमारे पार्लियामेंट में इसका मतलब क्या है। फर्स्ट वी टेक द सिंपल मेजॉरिटी। What is simple majority? A majority of more than 50% of the total members present and voting in the House of Parliament is referred to as the simple majority. This is also known as the working or functional majority. We can understand by an example. If there are two vacant seats in the Lok Sabha and 30 of its members abstain from the voting, then only 513 members, that is the 545 minus 2 minus 30 equal to 513, are present and voting in that house. In that case, the simple majority of Lok Sabha is 256, which is the 50% of the 513. Friends, like this type of majority is widely used in the Indian Parliament. Whenever the type of majority is not stated in the Constitution of India for carrying out a particular business, then the simple majority is used in the Indian Parliament. दोस्तों, इंडिया की पार्लियामेंट में हम चार तरह की मेजॉरिटीज़ को देखते हैं, जिसमें पहले आता है सिंपल मेजॉरिटी। तो इस सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जिसमें मान लीजिए कि लोकसभा में 2 सीट्स वैकेंट है और 30 मेंबर्स इसमें आए ही नहीं हैं। तो टोटल मेंबरशिप 545 की कितना, 513। 545 minus 2 minus 13, that is the 513, and 50% of the 513 इज द 256। तो 256 जो है वो क्या हो गई, सिंपल मेजॉरिटी बन गई। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सिंपल मेजॉरिटी लगती है दोस्तों, जिसमें पहले आता है टू पास दी ऑर्डिनरी बिल, टू पास दी मनी बिल, टू पास दी फाइनेंशियल बिल, टू डिक्लेयर ए स्टेट इमरजेंसी, दैट इज द प्रेसिडेंट रोल इन द स्टेट इज कंसर्न, टू पास ए कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा and legislative assemblies for the ratification of constitutional amendment bills by the state legislature. In all that cases, a simple majority is required as far as the Indian parliamentary procedure is concerned. This is the first important type of parliamentary type, that is the simple majority. Second one is the absolute majority. A majority of more than 50% of the total strength of the particular house is referred to as the absolute majority. In case of Lok Sabha, absolute majority plus total 50% of the membership of the house plus 1, that is the 273. In case of Rajya Sabha, absolute majority is 50% of the total membership of the house plus 1, that is 123.
clearly we can say that the Lok Sabha's total strength is 545. Half means 272 plus 1, that is the 273. So 273 is the absolute majority. As far as the Rajya Sabha is concerned, the total membership of the Rajya Sabha is 245 and half means 122 plus 1, that is 123. So this is the absolute majority as far as the Rajya Sabha is concerned. So here one thing is important, that the absolute majority is not used by either house of the parliament to pass any legislation. Rather, it is used in the general election, means the political party which gains the absolute majority form the government at the center. दोस्तों अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है आधे से ज़्यादा अगर मेजॉरिटी हो गई तो हम उसे अब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर हम राज्यसभा को लेंगे तो इसमें कितने हो गए 250. इफ़ वी टेक द 250 एज द टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा में टोटल मेंबर को अगर हम 250 लेंगे तो उसका आधा होगा 123 प्लस 1, दैट इज़ द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा. सो लेकिन इस कॉन्टेस्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे दोस्तों कि हमारे भारत के पार्लियामेंट के कोई भी लेजिस्लेशन में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ जनरल इलेक्शन के समय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ होता है. मतलब ये कि अगर कोई भी पार्टी आधे से ज़्यादा वोट अचीव करती है या गेन करती है तो वो सेंटर में अपनी सरकार बनाती है. सो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंडियन parliamentary system is concerned, or the majority of Indian parliament is concerned, that is the absolute majority. So now we take the third type of majority, that is the effective majority, which means a majority of more than 50% of the effective strength of the house of the parliament is considered as the effective majority. Here the term effective strength refers to the number of members present in the house. This majority is calculated by deducting the number of vacant and absent seats from the total strength of the house. For example, there are 5 vacant seats in the Lok Sabha, means what will be the number of strength of effective majority of Lok Sabha? It will be 540, that is 545 minus 5. So 540 members is the effective majority. As per our constitution, the effective majority employed in the following cases, that is article 67 clause B, that is the removal of the vice president who is also the chairman of the Rajya Sabha, we know that. Second one, article 94 clause C, removal of the speaker and deputy speaker of Lok Sabha. Then article 179 clause C, the removal of speaker and deputy speaker of the state legislative assemblies are concerned. दोस्तों इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि किसी भी पार्लियामेंट की सभा में आधे से ज़्यादा मेंबर्स का प्रेजेंट रहना. नेक्स्ट वी सी द फोर्थ टाइप ऑफ मेजॉरिटी सिस्टम as far as the Indian parliamentary system is concerned, that is the special majority. So what do you mean by a special majority? This is the fourth type of majority in which any type of majority other than the absolute effective and simple majority employed in the houses of the parliament is known as the special majority. There are 4 types of special majorities mentioned in the constitution, that is the special majority as under article 61, second the special majority article under article 249, special majority under article 368, and special majority under article 368 plus 50% of state ratification by simple majority. So these are the 4 important special majorities or relating articles that very close to the Indian parliamentary system or type of Indian parliamentary system is concerned. So first we take the article 61 of the Indian constitution, deals with the procedure for impeachment of the president. Here special majority refers to the 2/3 of the total strength of the house. So second one is article 249, special majority refers to the 2/3 of the members should be present and voting. This majority used to make laws on the subject of state list.
Next, Article 368, here special majority refers to 2/3 of the members present and voting supported by more than 50% of the total strength of the house. For example, if a bill has to be passed in the Lok Sabha, it should get the support of 273 members, more than 50% of the total strength, and in addition to that, it should be accepted by more than 2/3 of the members present and voting in that house. So this type of special majority is employed in the following cases. First one, the constitutional amendment bill, removal of the judges of the Supreme Court and High Court, the removal of the Chief Election Commissioner, Comptroller and Auditor General of India, then the creation and abolition of State Legislative Council, to approve and to extension of national emergency. So in all the cases, the special majority is required as far as the Indian parliamentary procedure is concerned. So दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी इस प्रकार की मेजॉरिटी जो अब्सोल्यूट मेजॉरिटी में भी नहीं आती है, इफेक्टिव सिंपल इन तमाम मेजॉरिटीज़ में नहीं आती है, इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कह सकते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में 4 तरह के स्पेशल मेजॉरिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें आर्टिकल 61, जिसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो, जिसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबर की ज़रूरत होती है। दूसरा आर्टिकल 249, जिसमें हम स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 मेंबर रहने चाहिए और वोट भी करने चाहिए, और स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं इसको प्रोसीजर को करने के लिए हमें इस टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल 368, एक तरह की इम्पॉर्टेंट स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ किया जाता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की हमें ज़रूरत होती है। इस तरह की स्पेशल मेजॉरिटी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, then the comptroller and auditor general, then creation and abolition of state legislative assembly, to approve and to extension of national emergency, इन तमाम केसेस में हम क्या करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी का आज हम यूज़ करते हैं। So here friends, one of the important aspect I would like to tell you that what do you mean by a majority? Majority means a number or percentage equaling more than half of the total. In simple way we can say that it is the largest number. So friends, this is all about today's video, that is the types of majorities in the Indian Parliament. Friends, if you like my video, please share, subscribe and give thumbs up to my channel. Bye. See you friends. See you in my next video.